Good afternoon, all. I am still waiting for others to Good join. afternoon. Meanwhile, could someone confirm if you guys are able to see my screen, hear me well? Yes, Sohail, bhai, we are able to see it. Yes, Okay, great. So, guys, today we will be discussing only resume preparation, job portal, how to explain your work profile, how to explain your job, about package, notice period, how to deal with them, how to deal with your team hierarchy if they are asking, ticketing tool. I will explain it to you everything, right? Or we are going to have 3 sessions, 40 minutes each, uh, as normally we have, right? And these are being recorded, so I'll upload the recording. I thought that we could have this at the end of the session, the training session, but now because we'll be having a break next week, right? And we haven't completed our portion yet. So few of you requested that could we do this now? So we can start with the interview, and I thought it makes sense. So today we'll be discussing it in a generic manner, which will apply to most of you. In fact, to all of you. Still, if any of you has any doubt or something, we can discuss that on individual basis. That doesn't have to be in recording. That's completely fine. Okay, so I'm still waiting for others to join, maybe 1 or 2 people, and then we'll start. Just give me a minute, guys. Uh, and I would say I would request you guys not to bring any technical questions here. I just want this to be a purely resume building and portal session. Got it? Technical questions we'll be doing in our weekend sessions. If you have anything, we'll be doing that later. Uh, so I'm just waiting for others to join, and then we'll start quickly. Because Rishi has approached me for this, so I'll be taking his Naukri profile as an example. Uh, I had asked him to send a resume, but his resume is in PDF format, so I won't be able to edit that. But I'll show it to you. I'll show you another profile, how to create it, how to make it. Just one more minute, guys, and then we'll start. 14:35 will start. Just a minute, we'll wait. And I'm telling you again, if you think something is not, it's applicable to you, you think, yaar, mera profile thoda sa alag hai, how will I portray? So we are going to cover that one-on-one session. Maybe hum log isko karte rahenge. Don't worry about it. This is not going to be a final version where I'm discussing, but yes, majority parts we are covering here. Portal, resume preparation. And when I say, guys, resume preparation, here I'm not at all talking about the format. Feel free to pick any format which pleases you, right? Here I'm just talking about the content. If you like this format, the one which I'm going to show you, feel free to use it. It is already there in our shared folder. I can share it with you again. But here I'm not talking about the format. I am concerned about the content. Format आप लोगों को जैसा पसंद आता है, आप लोग वैसा रखो. ठीक है, so let's start. We have waited for 5 minutes. We have 13 people now, and sessions are being recorded so others can see it later. Right. So very first thing, I'll come to resume. Before that, I want to explain it to you that about your team. If an interviewer is asking, most of the time they won't ask. Uh, बहुत rarely ऐसा question आता है, and these questions will come after your technical round, guys. This is a managerial round question. Techno manager एक round होता है जहाँ पर एक दो छोटा मोटा technical questions पूछते हैं, and then they talk about your job. And sometimes in some company you will see a techno manager भी वहीं बैठा है, then architect or tech lead भी वहीं पर बैठा है, so it will be a technical round plus managerial round. So you never know when will you face these questions. And obviously HR person, before you schedule your interview, the first point of contact is HR person. So HR person will also ask these questions. Sometimes they don't ask, you tell them this proactively, so it gives them a confidence कि एक अच्छा profile हमारे पास आया है. Okay, so let's start. Whenever you talk about your profile, no matter what experience you have, किस तरह का experience, will come to that कि आपका experience कैसे portray करना है. Okay, we are coming to that. If they ask about your team, all of you, it applies to all of you. We are going to say that I am a part of Cloud Foundation and application migration team. Do not go by jargons, कोई बड़ा technical term नहीं है. This is nothing but what we have been doing in our training in so far in our training. जितने भी 52 sessions में हमने आज तक जो किया, that is Cloud Foundation and application migration. When I say application migration, you don't have to work, you don't have to do anything at the application level. वो application team करेगा, but वो application जिस पे hosted है,
उन मशीन्स का माइग्रेशन, आई नो माइग्रेशन टॉपिक हमारा पेंडिंग है, वी आर गोइंग टू डू दैट, बट माइग्रेशन करने से पहले आप लोगों को क्या करना होता है, यू क्रिएट अ लैंडिंग जोन। लैंडिंग जोन में क्या होता है, आपका रिसोर्स ग्रुप बनाना, वीनेट बनाना, सबनेट बनाना, वीनेट पियरिंग करना, स्टोरेज अकाउंट बनाना, देन वर्चुअल मशीन्स बनाना। सम टाइम दिस क्लाउड फाउंडेशन जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन। सो एवरीथिंग वट एवर वी हैव डन, ये सब इसमें कवर हो जाता है, राइट? सो डोंट गो बाय jargon, say it very clearly that I'm a part of Cloud Foundation and Application Migration team. Or if you want more easy, you can say I'm a part of implementation team. Implementation I have been discussing with you guys many a times, right? So I hope no one has the confusion by now. इसके बाद वाले जो पार्ट्स मैंने बोले आपको, माइग्रेशन, स्टोरेज, आई नो वी हैव नॉट कवर्ड देम, वी आर गोइंग टू कवर देम, एंड आई टोल्ड यू गाइस दैट दिस इज आवर, this is not a technical round, so please no technical questions. We will have another session, we'll have our tomorrow and today after tomorrow session we have for technical discussion. This is purely resume building, right? So any doubt in this one, that what you guys are going to say, that you're a part of Cloud Foundation and Application Migration team, or you say I'm a part of Cloud Foundation team, or you say I'm a part of Implementation team, or Platform Manager, or sorry, Platform Engineer team. All these four words, they have same meaning. जो आपको पसंद आए नोटबुक में भी लिख लो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, उसको बोलते रहो, एक ही को फॉलो करो तो इट बिकम्स इजी, और उसमें आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधर जाता है, एंड देन आपका बोलने का एक तरीका, कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ जाता है, राइट? सो इट विल हेल्प यू अ बिट. Then what about your team? This is something, do not follow this, the one which is there in the OneNote, do not follow it exactly, because this was for a batch which I conducted for architects, right? So here you can say that we are three platform engineers. You can say we are three platform engineers. You can say 4, 5, कुछ भी है, बहुत 10-12 मत बोल देना, इतनी बड़ी टीम नहीं होती है normally. ठीक है, so 3 से लेके 6 के बीच का कोई भी number, whatever you like, keep pick it up. We are three platform engineers, one architect and one lead architect, one solution manager, one service delivery manager. So everything remains same here, except this. Except these three architects, what would you say? We are three platform engineers. Or let me change it for you. So, and all of you have access to this OneNote, right? Online copy मैंने सबके साथ share किया है. Feel free to follow it from here. So I'm a part of Cloud Foundation team and Application Migration team. इसके लिए आप बोल सकते हो implementation team, Cloud Foundation, Cloud implementation, platform engineer, anything. सब मिक्स करके मत बोल देना, ठीक है? Pick anyone, whichever you like. Implementation team and migration team. Application migration बोल दो, or just migration team. I'm making it easier for you. And then there are three platform engineers or implementation engineers, whatever you like. दोनों का मतलब exactly same है. We are three engineers, one lead architect, or in this case, let's say two architects. Sometimes the solution manager and lead architect ये same चीज होता है. So you say two architects, one lead architect, or one solution manager, and lastly delivery manager. Delivery manager बहुत ज़्यादा technical role नहीं होता. Service delivery manager, it's about handling client, discussing timelines, पेमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो आप जहां पर भी आप काम करो, आई एम श्योर आप सबके पास एक मैनेजर होगा जो क्लाइंट से बाकी सारा डिस्कशन होता है ना, छुट्टी का, टीम का, XYZ ABC, जो भी है, दैट इज योर डिलीवरी मैनेजर. क्लियर सो फार गाइस? एनीवन डिड नॉट अंडरस्टैंड कुछ भी यहां तक? feel free Got to it. ask guys. Yeah, okay, because I'm not going to Uh, repeat this All session good. again. Great. Now when it comes to environment, what kind of environment do you work? ये टेक्निकल राउंड में भी आता है, कई बार आता है, राइट? दिस क्वेश्चन विल कम वेरी ऑफन. सो यू कैन से वी हैव अ वन क्लाइंट, दिस इज वन सिनेरियो, इसमें आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा बना लो. वी हैव वन क्लाइंट, वन टेनेंट. बाय क्लाइंट दिस इज नॉट अ टेक्निकल टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट. ये क्लाइंट बिजनेस टर्म की बात कर रहा हूँ, दैट आई एम वर्किंग फॉर एग्जांपल, बिकॉज टुडे ऋषि हैज अप्रोच फॉर दिस, वी आर डिस्कसिंग ऋषि's resume. So I'll take these examples. Now Rishi is working with Sybase. Sybase is a payroll company. Now let's say, for example, Rishi is working for a firm called, for their client, Bank of America, right? I am not saying he's working, just examples. So Bank of America. So Bank of America here is the client. That is what we are talking about. So I have one client, and that one client has one tenant.
Now all of you know what tenant is. This we have covered in technical training. If you don't know, go back, watch the videos. Otherwise we'll discuss them later, but not here. Technical questions nahi le rahe hum log aaj. Right? So all of you know what a tenant is. Then that tenant or that client has 29 subscriptions. Okay. Again, these numbers are vague. It's completely up to you. You can say we have 2 clients, we have 2 tenants, we have 4 subscriptions, up to you. This one I have picked it from somewhere. They had 29 subscription. उसको मैंने ऐसे यहाँ पर ये कर दिया. Divided region based, sector based. कि हर region के लिए एक subscription बना रखा है. You can say it is divided on the environment based. Environment based कैसे होगा? Production environment के लिए एक subscription, test environment के लिए एक subscription, and development environment के लिए एक subscription. You can say this also, whatever suits you. Again, I'm telling you, this is not the last time we are discussing. हम individual basis पे भी discuss करते रहेंगे, and in our training sessions, we have been discussing it many times, right? You guys can see where I practice, there are 2 subscriptions. Where you guys practice, there are only 1 subscription you follow, right? Is it visible now, Salman? I've zoomed it a bit. Yes. Okay. And then this copy, all of you have this, guys. I always tell you to open your copy also. Online आप अपने सामने भी open करो, it will be easier, but it's okay. We can follow it now here, right? So you can say you have 1 client, 1 tenant, 29 subscriptions. It is divided region based, sector based. We work on all services. Resources get divided based on location. One application will have 1 resource. इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यार मुझको. Okay, here. One application will have 1 resource in multiple subscriptions as per their location need, however divided by resource groups. इसको मैं explain करता हूँ. Now I just read it, so don't panic. And you don't have to follow exact sentence. इसको आप अपनी तरफ से कुछ भी बना लो. That I am handling 2 clients. बहुत ज़्यादा exaggerate मत कर देना that I am handling 6 or 5 clients, which is थोड़ा सा impossible sound करता है, right? So 1 या 2 client, maximum 3 clients are enough. Don't say more than 3 clients. So I'm handling 1 client. That client has 1 tenant. That client has 4 subscriptions. 4 subscriptions कैसे होता है? Divided by environment. Environment क्या है आपके? Prod environment, development environment, and testing environment, right? I am keeping this one. इसको मैं यहीं पे ऐसे ही रख रहा हूँ. So if someone wants to pick this one, it's fine. Prod, dev और test वाला आप अभी आप लिख लो, and then you prepare one for yourself. It is easier, so I'm not writing that. ठीक है? So you have to mention that these are the subscriptions we have. Then all services. Now, what do you mean by services? All the resources which we create, virtual machine, VNet, subnet, whatever we have been learning till now, जितना भी हम लोगों ने बनाया है, right? Everything is a service in Azure. ठीक है? So all resources and services, they get divided based on location. मैंने यहाँ पर location लिखा है. If you're talking about environment, आप लोग environment लिख लो कि अगर आपके 3 environment है, prod, development and test, तो सारी services भी उसी तरह से divide होगी. Now what do you mean by that? कि अगर कोई test purpose के लिए server मांग रहा है, तो आप उसको test subscription में रखोगे. कोई development purpose के लिए server मांग रहा है, आप उसको development subscription में रखोगे. कोई production purpose के लिए server मांग रहा है, आप उसको production इसमें रखोगे. Now where do you get all these details? I'm going to show you that at the end. Ticketing tool हम last में देखने वाले हैं, जिसमें आपको ये सारी information मिलती है. I have been telling you about ticketing tools, so we'll see that later. But this is how you can explain, right? और इतने detail की जरूरत नहीं है. If this confuses you, that's fine. You can read till here, and that should be enough. Either location or environment. Mostly आप लोगों को environment based मिलेगा, so you can stick with environment based, right? And when you say 2 clients, तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा. Don't confuse yourself then. If you have 2 clients का क्या मतलब होता है? There are some companies, for example, now Sybase has doesn't have a pattern of shared resources. That Rishi, if he is working with Sybase, okay, so Sybase will assign Rishi to one project, Bank of America, and the billing will be done from Bank of America. So Rishi will get his payment from Sybase. That's all. इतना ही. Bank of America के पास काम है, तो Rishi कर रहा है. नहीं काम है, that day he is sitting idle. No worries, because billing हो रहा है, irrespective of the work. But there are some companies जो shared resource के base पे काम करते हैं. That Rishi has a skill set of Azure, and that company has 5 clients of Azure, Bank of America, let's say Kraft, Swiggy, etc., etc. So what will they do? ऋषि को 2 क्लाइंट के साथ बांट देंगे, एंड नाउ इट इज ऋषि's जॉब कि कभी इसका काम भी करे, कभी उसका काम भी करे, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो व्हेन यू से दैट आई एम हैंडलिंग 2 क्लाइंट्स, नेवर मिक्स देम अप. अगर 2 क्लाइंट बोल रहे हो तो कंप्लीटली अलग होगा.
दो क्लाइंट है, मे बी एक क्लाइंट का एक टेनेंट है, दूसरे क्लाइंट का एक टेनेंट है, टोटल 2 टेनेंट्स। मे बी एक क्लाइंट के 4 टेनेंट है, एक क्लाइंट का 2 टेनेंट है, एक क्लाइंट के 2 सब्सक्रिप्शन है, दूसरे क्लाइंट के 4 सब्सक्रिप्शन है। सो आई लीव इट कंप्लीटली अप टू यू। व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, से दैट। आई विल से स्टिक टू वन क्लाइंट, रेस्ट इज अप टू यू। हाँ, आप अपने जो भी काम कर रहे हो ना, जिस भी कंपनी के लिए, व्हाटएवर करंट प्रोफाइल यू हैव, यूटिलाइज दैट, इट विल बी इजियर फॉर यू टू स्पीक। बस आपका जॉब प्रोफाइल हमको चेंज कर देना है, राइट? नो वन नोस कि आप करंटली किसके लिए काम कर रहे हो। एंड वन थिंग गाइस, you never have to give client's name. You'll always speak in domain term. Okay, I work for one client, it is digital marketing domain. I work for a client, it is banking domain. I work for a client, it's a healthcare domain. I work for a client, it's a payment gateway domain. I work for a client, it's a government domain. Understood? आप किसी को भी किसी कैटेगरी में डाल दो, नो वन इज गोइंग टू क्रॉस चेक दैट। कोई आके क्रॉस चेक करने का कोई मेथड नहीं होता है, राइट? सो व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल विद। डिजिटल मार्केटिंग वाला इजी होता है, बैंकिंग डोमेन में थोड़ा सा डिफिकल्ट, कोई अलग टूल होते हैं, मीडिया डोमेन में कुछ अलग टूल्स होते हैं। सो स्टिक टू डिजिटल मार्केटिंग वाला, ज्यादा सिंपल होता है, बेटर होता है। रेस्ट इज अप टू यू। आप अपना थोड़ा बहुत होमवर्क करके ये कर सकते हैं, दैट आई एम वर्किंग विद दिस क्लाइंट एंड दिस डोमेन। यू डोंट हैव टू गिव द नेम, कोई भी नाम नहीं बताना है आपको, राइट? सो दैट यू कैन डू। क्लियर है यहाँ तक? Yes. Next thing, it's tools. Do not read this at all. These tools are completely for architects. MS Visio, Draw.io, ServiceNow. ServiceNow a common cheese, you can say this. And people who do understand what is a ticketing tool, I'm requesting you to stick with your own ticketing tool. जिस पे भी आप काम कर रहे हो ना, I'm sure some of you are working on ServiceNow, some of you are working on Jira, some of you are working on PagerDuty, some of you are working on iSupport. किसी भी तरह के टूल पे आप काम कर रहे हो, stick to that. उसी में आप बस उसको Azure का प्रोफाइल बताना है। सो यू आर फेमिलियर विद दैट टूल, इट विल बी इजियर फॉर यू टू एक्सप्लेन। उस टूल को एक्सप्लेन करना इजी होगा। एंड पीपल हु हैव नो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी कि एक टिकटिंग टूल होता क्या है, for them I've got this basic subscription for PagerDuty. This is a PagerDuty ticketing tool and I'm going to show it to you कि इंसिडेंट बनता कैसे है, एंड यूजर कैसे बनाएगा, आपके पास कैसे आएगा, असाइन कैसे होगा, टीम का नाम कैसे होगा, that we are going to do at the end of this, right? So but what I'm trying to say here, if you have your own ticketing tool, आपके ऑफिस में कोई ticketing tool यूज कर रहे हो आप लोग, stick to that strictly. That is my suggestion. It will be easier for you to speak. सारे टूल ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, ठीक है? It is as good as that you're using Swiggy for to order your food, or you're using Zomato. Basic concepts and everything is same. Just UI थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ change होता है, दो चार options click यहाँ वहाँ change होते हैं, right? ServiceNow onboarding form. ServiceNow onboarding form क्या होता है? Now this is because we are talking about ServiceNow tool. इसलिए मैं ServiceNow बोल रहा हूँ। आप अगर PagerDuty बता रहे हो तो PagerDuty onboarding forms, migration form, ये वो फॉर्म होते हैं जिसमें आप लोगों को रिक्वेस्ट आता है that someone wants to create a virtual machine. तो उसमें क्या क्या डिटेल्स आने वाली है, अगेन वी आर गोना सी दैट व्हेन वी सी द टूल। सो डोंट वरी अबाउट दिस, इसको ज्यादा यहाँ पर आप फोकस मत करो। व्हेन इट कम्स टू यू, आप टूल्स में क्या बोलोगे? एक तो Azure पोर्टल, वो एक आपका टूल हो गया। पीपल हु आर फेमिलियर विथ डेवऑप्स टूल, शेफ वगैरह, दे कैन से, और आप अपने भी इसमें किसी टूल से फेमिलियर हो, से दैट। किसी भी तरह का मॉनिटरिंग टूल वगैरह आता है आपको, टॉक अबाउट इट, राइट? एक है आईपी ट्रैकिंग टूल, IPAM, इट्स द आईपी ट्रैकिंग टूल, यू कैन यूज दिस नेम। अब नाउ व्हाट इज आईपी ट्रैकिंग? जितने भी आप सर्वर वगैरह बनाते हो ना, इसका इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने आज एक सर्वर बनाया तो उसको डेटाबेस में अपडेट कर दो। Azure पे तो होगा ही वो, बट आपके डेटाबेस में भी अपडेट कर दो दैट आई क्रिएटेड वन मशीन XYZ और उसको मैंने ये आईपी असाइन कर दिया। दो वो आईपी आपको ऑलरेडी आया होगा आपके लो लेवल डायग्राम में, आपके आर्किटेक्चर टीम से, राइट? वो आया होगा आपको आईपी, बट स्टिल इट इज योर जॉब कि इसको आप अपडेट करो। सो दैट टूल इज कॉल्ड IP tracking tool and one of them is IPAM. IPAM is a product name. ठीक है, प्रोडक्ट का नाम है, एक टूल है। इफ यू गूगल इट, आपको इसका थोड़े इमेजेस वगैरह मिल जाएंगे। सो यू कैन से दिस, एंड इफ दे आर नॉट आस्किंग, डोंट से इट एनीथिंग, राइट? एंड इफ यू नो एनी फेमिलियर टूल है आपको पता है, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। एंड देन फॉर माइग्रेशन वी आर गोना लर्न टू टूल्स, Azure Migrate Tools and Azure Assessment Tool, but we'll cover that जब हम माइग्रेशन का टॉपिक करने वाले हैं। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली एक्सेल, पावर पॉइंट, वीजियो, ये सब आप बोल सकते हो in terms of spectator. So Visio, I cannot, you'll have to say that I cannot draw a file in Visio, but I can read a Visio file. Now, what is a Visio file, guys? Visio file is something which your एक टिकट में आपको लग के आएगा, या फिर आपके आर्किटेक्चर टीम से आपको ईमेल आएगा और उसमें कंप्लीट डिटेल्स होती है।
किस तरह से आपको किस तरह से आपको डिप्लॉय करना है. I have one, let me show it to you. I'm opening that on my another screen. Let it get open and I'll show it to you. I have created it for you. So let me open that. ये हमारे कल के प्रैक्टिकल के लिए मैंने बनाया है, कल के सेशन के लिए. So this is how you get it. That you will get a ticket और उसमें एक attachment में होगा VGO file. VGO होगा या draw.io होगा. So when they ask you, do you know anything about VGO? You have to say, oh, yes, I have worked on VGO. Worked as in, I know how to read the file, right? I can't amend it. I can't create the diagram. I can't design it, but I can read it. So इस तरह से आपको कुछ आता है. यहाँ पर मैंने multiple बनाए हैं, तो multiple नहीं आते हैं आप लोगों को. एक टिकट के साथ एक ही आता है. So let's say that I want you to deploy a VPN. तो इस तरह से आपको एक टिकट आएगा, उसमें आईपी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आएगी और इस तरह से आपको एक ये आएगा वीडियो फाइल आएगी. बट इट विल बी थोड़ा सा और बेटर होगा. आई डिड नॉट वांट टू स्पेंड माय टाइम, यहाँ पर ज्यादा मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए इसको थोड़ा सा रफ बनाया है. बट व्हेन वी डू इट फॉर क्लाइंट और फॉर आवर प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स, वी डू इट इन वेरी प्रोफेशनल मैनर. ठीक है, ये थोड़ा भी आपको आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं दिखेगा. कलर थीम एक फॉलो होगी. नाउ इफ यू सी, मैंने एक ही इसको आईपी लिखा है, वहां पर आपको सारे मशीन्स की आईपी दिख जाएंगे. यहाँ पर पब्लिक आईपी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, बिकॉज वी आर गोना डू दिस. ये मैं कल प्रैक्टिकल में कवर करूंगा. बट यू विल गेट द आईपी एड्रेस ऑल्सो, यहाँ पर क्या आईपी लेना है. सो दिस इज हाउ यू गेट द कंप्लीट डिटेल्स, right? So this is your VGO file. So you have to say, yes, we used to get tickets and we used to use your VGO files were attached to that. इस तरह से आपको explain करना है, and I can read VGO files. Clear? Say this is representing the VNet, कि VNet का क्या नाम होना चाहिए, VNet का space कितना होना चाहिए. Everything will come to you in detail. You just have to deploy, and that is what you have to say in your interview. Clear, guys? Any question? No. Okay. When it comes to process and flow, कि एप्लीकेशन वगैरह के बारे में आपसे कुछ पूछ रहा है कोई. लेट मी सी, was someone has, is this LED? Yes, you can say this is a low level diagram, Fauziya. But low level diagram will have, हम कभी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में when we go, जब एक्चुअल लाइव एनवायरनमेंट होता है, तो इस तरह से हम कभी भी नहीं देते, राइट? आई टोल्ड यू विल क्रिएट अ वेरी डिटेल्ड डायग्राम, 2-4 पेज का होगा. इसके साथ आपको एक पीपीटी भी हम शेयर करते हैं. आई मीन द आर्किटेक्चर टीम, दे विल शेयर अ पीपीटी विथ यू, जिसमें और ज्यादा डिटेल में होगा. I mean, a bunch of files you will get. That complete document is called low level diagram. Not a single page is called low level diagram. जहाँ पे आपकी IP की details होगी. Now looking at this diagram, do you understand कि किस subscription में करना है? Let's say that you're working for a client. That client has 4 subscriptions. Looking at this diagram, are you guys able to figure it out कि किस subscription में deploy करना है इसको? UT-Kloud. No, that is just a name. It is just a name. Okay. It is not mandatory कि मैं अपने subscription के नाम को और VNet के नाम को match करूंगा, right? So it's just a name. So we do not assume anything. इस तरह से कुछ नहीं करते. So that's what I'm trying to say. कि when it comes to you, actual में जब आता है तो एक detailed diagram आता है, जिसमें और इसके साथ एक attachment PPT भी आता है आप लोगों के पास, जिसमें detail में होगा that this is the tenant we are talking about, this is the subscription we are talking about. And यहाँ पर भी show किया है कौन सा region में होगा, but still उस document में भी ये सारी चीजें breakup में होती है. So that is called a low level diagram. Clear है? This is just a rough one I have created for you. This we are going to use in tomorrow's session. But when it comes to you, actual में काफी डिटेल में और एक अच्छी सी डायग्राम आती है. Clear है guys to everyone? Yes, Oliver. Okay. Okay. Now talking about the process and flow. So 2 applications at a time maximum. It could be migration or new onboarding, adding components. Now what does it mean? अब application का क्या मतलब है guys? I have explained it to you already. Application क्या होता है? That behind one application like Swiggy या Paytm वगैरह के एक application के पीछे ही जो है ना, आपको 50 से 100 सर्वर्स लग जाता है डिप्लॉय करने के. So when you are saying के 2-3 applications at a time maximum, right? What you're trying to portray here that you are not working on application. When you say application, that does not mean कि आप coding कर रहे हो. That does not mean आप application बना रहे हो. Application team will do that. Here you are saying कि applications से supported जो भी चीजें है ना, वो आप कर रहे हो. Let's say now there are 2 applications simultaneously. मेरी एक finance team है, वो एक नई application पे काम कर रहा है, और legal team है, वो एक new application पे काम कर रहा है. And both teams have approached our team. Okay, I need 10 servers, I need 20 servers, I need this VNet, I need that subnet. वो सब आपको टिकट में आ गया. So इस तरह से एक इंडिविजुअल जो है कितने एप्लीकेशंस पे काम करता है एट अ टाइम? मैक्सिमम 2, डोंट इवन से 3. ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है एक ही क्लाइंट के मल्टीपल एप्लीकेशंस भी नहीं दिए जाएंगे.
Are you getting it? Let's say that you're working for Bank of America. Now Bank of America के एक finance department, credit card department एक application team पे काम कर रहा है, and now they have approached you कि हमको 10 server चाहिए, 50 server चाहिए, पूरा को स्पेसिफिकेशन वगैरह दे दिया, एंड देयर आर सम अदर टीम आल्सो, लीगल टीम है, सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो बोल रहे हैं हम भी कुछ काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी सर्वर चाहिए. सो व्हेन आई से दिस 2 to 3 एप्लीकेशन एट अ टाइम, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट योर टीम, कि आपके टीम के पास एट अ टाइम इतना काम नहीं आएगा कि 10 टीम ने एक साथ अप्रोच कर लिया और सबको आप ही केटर कर रहे हो. दैट वोंट हैपन. वैसे होगा तो योर मैनेजर, योर सर्विस डिलीवरी मैनेजर, योर सोल्यूशन मैनेजर, योर आर्किटेक्ट, दे विल डील विद दैट. दे विल से कि हमारे पास ऑलरेडी इतना काम है, वंस दिस इज डन देन ओनली दिस कैन बी डन और दिस विल बी असाइंड टू सम अदर टीम. तो अल्टीमेटली आपके पास भी जो है एट अ टाइम आप एक या दो एप्लीकेशन पे काम करते हो, उससे ज्यादा नहीं. क्लियर है? एंड इट कुड बी माइग्रेशन या न्यू ऑनबोर्डिंग, दोनों भी. न्यू ऑनबोर्डिंग क्या होता है? ऐसे एप्लीकेशन जिसका ऑन प्रेमाइसेस पे कोई सर्वर है ही नहीं, सब कुछ आप स्क्रैच से बना रहे हो. माइग्रेशन क्या होता है? जो एप्लीकेशन ऑलरेडी ऑन प्रेम पे है बट आप उसको माइग्रेट कर रहे हो. सो दोनों भी केस में मशीन्स बननी है, दोनों भी केस में वीनेट बनना है, दोनों केस में सबनेट्स बनने हैं, एंड एवरीथिंग व्हाट एवर वी सॉ, सम केसेस लोड बैलेंसर बनने हैं, राइट? जितना भी हमने देखा है ना, वीनेट पेयरिंग वगैरह सब में होना है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर दैट एट अ टाइम यू डू नॉट वर्क मोर देन 2 एप्लीकेशंस. क्लियर है गाइस? Yes, sir. ओके. नाउ migration जब होता है ना, this I'm going to teach you in detail when we do the migration, but I want this to be in this recording, hence I'm explaining it here. So again, no technical questions please, only the resume and interview questions we are discussing here. Okay. VMware to Azure, 45 to 50 servers, 5 per batch. On complete application migration takes 8 weeks in total to migrate on Azure. 8 weeks from assessment to hypercare period. Last 2 weeks. Now let me explain this sentence. Sorry. Okay. So now explaining this sentence, what is trying to say कि आप अगर migration की बात कर रहे हो, या ये new onboarding में भी same होता है. Let's say that you are migrating VMware से या Hyper-V से या on-prem के physical server से. आपको 50 सर्वर यहाँ पे migrate करने हैं. So how many servers can you do? You think एक दिन में कितने कर सकते हो आप? Now you guys have seen कितना time लगता है, right? सर्वर बनाने में. So what do you think कितने कर लोगे आप? 50 सर्वर के लिए कितना time चाहिए आप लोगों को? Don't go by this sentence. Go by your experience. Asking you guys. You guys have created virtual machines now. I'm saying मुझको 50 नए servers चाहिए. And let's say you are 3 people in a team. So how much time would you require, guys? Can someone answer 10 quickly? days. 10 days? How did Yes. you calculate? Or let's make it easier. 2 people. 2 platform engineer, 50 servers. How many days do you need? 15. Based on your experience, guys. Don't hesitate. There is nothing right or wrong. Depend 15. on the app, Sorry, depend on the. nature of app, Sorry, didn't get you. Depend on the what? nature of the application. No. What do you have to do with the application? Guys, understand one thing. You are not doing anything for the application. When you say application, I just explained. जब आप application बोल रहे हो तो you are just helping with the supporting things. आपको सिर्फ सर्वर बना के देना है. I'm not saying कि application ready हो जाएगी. सर्वर बनाने के बाद उसमें डेवलपमेंट टीम मे बी 3 months तक काम करते रहेगा, उसके बाद एप्लीकेशन अप एंड रनिंग होगा. None of your business and none of your hectic. So how is it impacting you? कि what is the nature of the application? आपको तो सर्वर ही बनाना है ना. मैंने आपको साइज दे दिया कि 4 GB रैम, 2 वर्चुअल सीपीयूज के 50 सर्वर मुझको चाहिए. Then how is it impacting you कि मैं उसमें क्या एप्लीकेशन रन करने वाला हूँ? Yes, guys. Based on your experience, guys, I'm asking quickly. Based on your experience, what do you think? How much time will it take for you to create 50 servers? 2 people are there. Let's say you are 2 people. I am assigning you a task of 50 servers. What happened? आप लोगों ने इतना कैलकुलेशन नहीं किया अब तक कि आपको एक मशीन बनाने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है? On an average, it will take 50 to 40 to 50 minutes. So if 2 persons are working, so per day 10 servers can be completed. Okay, so you're saying that in 1 week you will give me 50 servers, right? Yes. Perfect. Answer is correct based on what we have been doing, but this is not what we are going to say, right?
what we are going to say and how much time it actually takes, approximately 8 weeks. इतना टाइम लगता है, 2 महीने लग जाएंगे आपको जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाते हो, क्योंकि जो सर्वर्स हम प्रैक्टिस में बना रहे हैं ना, इट्स वेरी सिंपल। आप उसमें अंदर जाके कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो, उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर रहे हो, आपको कोई रूल्स आपने कोई अप्लाई नहीं किया, राइट? वेरी सिंपल वी आर क्रिएटिंग, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग इट वेरी क्विकली, right? But I wanted to do that calculation, guys. Understand that. That is the reason I asked you to do. And that, based on our experience, the answer is correct. But no, प्रोडक्शन में बिल्कुल इस तरह से आप ये नहीं करोगे। प्रोडक्शन में से 50 सर्वर्स है ना, तो 5 पर बैच, और एक बैच के लिए ही आपको काफी टाइम लग जाता है। सो अप्रोक्सीमेटली इट टेक्स 6 वीक्स। और लास्ट के 2 वीक्स जो है वो कहलाता है हाइपर केयर पीरियड। व्हाट इज नाउ हाइपर केयर पीरियड? हाइपर केयर पीरियड इज समथिंग जब आपका पूरा सर्वर वगैरह बन जाता है ना, एवरीथिंग इज क्रिएटेड, यू हैंड इट ओवर टू क्लाइंट। मतलब ये जो टिकट आपके पास आया था कि क्रिएट दीज मेनी सर्वर्स, आपने एक टिकट बना दिया, इसको क्लोज कर दिया। नाउ 2 हफ्ते के लिए क्लाइंट उसको ऑब्जर्व करेगा, उस पर लॉग इन करेगा, चेक करेगा, एंड इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, ये स्लो चल रहा है, मैंने 4 GB रैम बोला था, आपने 6 लगा दिया, मैंने 8 बोला था, आपने 4 लगा दिया, उसको चेंज करना है, एवरीथिंग बेसिक थिंग्स सेटलिंग, दैट इज कॉल्ड हाइपर केयर पीरियड। वंस दैट हैज बीन सेटल्ड, उसके बाद ये चला जाता है आपका सर्वर सपोर्ट टीम के पास। उसके बाद कुछ इशू होगा तो देन आपके पास नहीं आएगा, देन सपोर्ट टीम विल हैंडल इट, राइट? बीइंग एन इम्प्लीमेंटेशन टीम, आप लोग हाइपर केयर पीरियड तक उसको सपोर्ट दोगे, विच इज ऑफ 2 वीक्स। सो नॉर्मली 50 सर्वर ये करने के लिए आपको 2 लोगों में समझ लीजिए 6 वीक्स का टाइम लगता है, एंड उसके बाद 2 वीक्स का एक हाइपर केयर पीरियड होता है। क्लियर है यहाँ तक गाइस? वन थिंग, दीज नंबर्स आर नॉट यूनिवर्सल, किसी भी तरह की नहीं है। एनीवन कैन चैलेंज, यू कैन से यार मेरे यहाँ पर इतना बड़ा बढ़िया प्रोसेस है, एंड देन वी हैव excellent engineers, I can get it done in 5 days. What are you talking about 6 weeks? So if someone says they can do it, no question. Someone says no, 6 weeks are very less, I would require minimum 8 weeks to deploy, and then 3 weeks of hypercare period, वो भी possible है। ठीक है, तो इसमें कोई डिबेट, कोई फाइट नहीं है। But what I want you to use when you give interviews, guys, use numbers. वो आपके एक्सपीरियंस को जेन्युइन बताता है, राइट? सो आई वांट यू टू यूज दिस नंबर्स। आप इसमें कुछ अमेंड भी करना चाहते हो, कंप्लीटली फाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? No. No. Okay, fine. Next one is no new onboarding starts with ServiceNow onboarding form. This we are going to see, but not ServiceNow. हम पेजर ड्यूटी में देखने वाले, जिसको ServiceNow आता है वो ServiceNow पे चिपके रहो। कोई किसी भी तरह का टूल, सब पीपल हु आर वर्किंग विद जीरा दे स्टिक टू जीरा, पीपल हु आर वर्किंग विद ServiceNow दे स्टिक टू ServiceNow। जिसको कुछ नहीं पता टिकटिंग टूल के बारे में, दे टॉक अबाउट पेजर ड्यूटी, व्हिच आई एम गोना शो यू। ठीक है, ऑनबोर्डिंग विल हैव HLD, व्हिच इज ऑनबोर्डिंग फॉर्म, मतलब जो आपका टिकट है उसमें होगा HLD, व्हिच इज हाई लेवल डायग्राम। फिजिकल आर्किटेक्चर, अगेन उसी का एक, द वन व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, के इसमें एक्स्ट्रा सर्वर्स कितने, आपको तो 50 ही डिप्लॉय करने हैं, बट एग्जिस्टिंग 2000 सर्वर्स है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दे देते हैं। एज इज आर्किटेक्चर डायग्राम, इसका मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग अभी जो ये कर रहा है infrastructure है, let's say it's not always the case that you are doing it from scratch, right? Most of the time infrastructure बना हुआ होगा, most of the time आपका subscription होगा, vnets भी होगा, सब कुछ होगा, 2000 server already running है, you're just creating a new resource group, a new vnet, new subnet and 50 servers, that's all you're doing. That does not mean कि आप सब कुछ आप ही scratch से कर रहे हो, right? बहुत कुछ होगा वहां पर। तो जो already है, for your information they will send as is in architecture diagram, वो भी आपके साथ भेजा जाएगा। And then टू बी और टारगेटेड आर्किटेक्चर डायग्राम, इसका क्या मतलब हुआ? एज इज का मतलब हुआ, लेट मी शो इट यू। एज इज का मतलब हुआ, उसमें बता देंगे दैट वी करंटली हैव, थोड़ा अच्छे फॉर्मेट वगैरह में होता है, पीपीटी वगैरह होता है, इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक्स गाइस। वी करंटली हैव 2000 विंडोज सर्वर्स, 600 लिनक्स सर्वर्स, 500 स्टोरेज बॉक्सेस, 10 vnet, 15 सबनेट्स, XYZ। ठीक है, ये हुआ आपका एज इट इज, जो है वो बता दिया आपको, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड टारगेट सर्वर, टारगेट क्या है? आपका टिकट था दैट यू हैव टू क्रिएट 2 vnet, 5 सबनेट, 50 वर्चुअल मशीन्स, ये आपके टिकट में आया है। सो टारगेट क्या हो जाएगा इसके बाद? ये 50 में से लेट्स से दैट 25 लिनक्स थे, तो टारगेट आर्किटेक्चर आपका होगा, हो जाएगा 625 लिनक्स सर्वर्स, 2025 विंडोज सर्वर्स,
VNet कितने हो जाएंगे? How many VNets, guys? 12, 12. Subnets? 15. 20. No, why 20, 15? yeah. Already, Yeah. I hope you understood the logic, right? I understand थोड़ा बहुत वो ये हो जाता है. You understood the logic. ये है आपका as is infrastructure. ये है आपके task. ये उसके बाद हो गया आपका future state infrastructure. तो आपके पास information के लिए आता है. So you should know कि कुछ गलत हो जाए बाद में तो आपको पता नहीं चाहिए कि पहले भी कैसा था. That does not mean आप इसमें से कुछ भी छेड़ रहे हो, but information के लिए आ जाता है. Clear है? So now if someone is asking you what do you understand by as is architecture diagram or target architecture diagram or to be architecture diagram, will you guys understand it well? Will you guys able to explain it? Yes. Okay, now I have said here HLD, which means high level diagram, क्योंकि इसमें आपको high level आएगा. ये सारे सर्वर्स के आपको IPs वगैरह कुछ नहीं आएगा, and you don't even require that. Why? Because I told you it's just for your information. Clear है? Yes. Okay. Now next is data classification, private, public, confidential, environment वही हुआ, production, test, ISTM approval, ये सब आपके टिकट में आएगा कि कोई सर्वर बनाने के लिए ISTM का अप्रूवल चाहिए. वो अप्रूवल अगर आपको नहीं लेना है, इट्स एवरीथिंग दे विल डू इट, बट यू शुड नो इट. आपके पास होना चाहिए और यू कैन से इट कि ये सब अप्रूवल वगैरह आने फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सेक्टर, रीजन कौन सा जाएगा, हाइब्रिड डिजाइन है, माइग्रेशन हो रहा है या न्यू है, आरबैक डिटेल्स क्या है. आई होप एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड आरबैक. हमने काफी डिटेल में इसको किया, राइट? आरबैक कौन सा है, रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आ जाएगी. कॉस्ट सेंटर नंबर कौन सा है, कॉस्ट सेंटर ये होता है दैट यू व्हेन यू क्रिएटिंग मशीन, ये बिलिंग इतना सारा जो होगा Azure पे, कौन से डिपार्टमेंट को कितनी बिलिंग लगनी चाहिए, वो कॉस्ट सेंटर नंबर. यू डोंट हैव टू मेक एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू मेक नोट ऑफ दीज थिंग्स व्हाइल क्रिएटिंग मशीन. वहां पर टैग्स वगैरह में ये सब लगता है. आई होप यू अंडरस्टैंड टैग्स ऑल्सो, ऑल ऑफ यू, राइट? वी हैव डन इट. टैग में ये सारी इन्फॉर्मेशन लग जाती है. क्लियर है यहाँ तक गाइस? Yes. Okay, so only 1 minute is left. We'll take a break of 5 minutes. Once this session is stopped, we'll take a break of 5 minutes and then we'll resume using the same link, right? So I'll see you guys at 15:55. Okay. Okay. Any questions do you have, guys? इसके बाद हम लोग then resume preparation पे शुरू करने वाले हैं. ठीक है? And you have the file, this file. Go through this, अच्छे से इसको एक बार पढ़ लो आप लोग, and then we'll go ahead. Let me stop this. See you guys in 5 minutes, 15:15, using same link.